Namaste beta. I hope you all are fit and fine. Beta, today we are going to discuss relative velocity and subtraction of vectors. And beta, this is the last video of this chapter, motion in a plane. So beta, first of all, I am talking about relative velocity in 1D, that is one dimension. It means objects are moving either along x or y or z direction. So beta, what is the meaning of relative velocity? Velocity of one object with respect to other. How beta? Suppose I am saying that velocity of a car is 60 km per hour. But in this example, I am telling the velocity of that car with respect to me. So it is a case of relative velocity. तो relative velocity का meaning क्या होता है कि एक object के respect में दूसरे की speed क्या है. Suppose two objects are moving with the velocity of Va and Vb respectively in the same direction. If I ask that what is the velocity of B with respect to A? Velocity of B with respect to A. So beta, this I will calculate with the help of VBA. It means velocity of B with respect to A. And beta, it is equal to Vb minus Va. And beta, VAB, it represents velocity of A, velocity of A with respect to B. And beta, it is equal to Va minus Vb. Clear? Beta, in the daily life experience, when you and your friends are going in the same direction on different bikes, then easily you can talk with each other, because in this case the value of relative velocity will be very less. But beta, what happens when you and your friends are moving in opposite direction? Then you cannot talk with each other, because you will feel that the velocity of your friend is very high, and your friend will think that velocity of your bike is very high with respect to him. Clear? So beta, how? Suppose you are moving with 15 meter per second in plus x direction, and your friend is also moving with 15 meter per second in the same direction. So beta, this is A and this is B. If I ask that what is the value of VAB, that is velocity of your bike with respect to your friend, and beta, it will be equal to Va minus Vb. Okay? Beta, one more thing, in the physics, whenever you will do the numericals, then choose the directions. How? One direction as positive and one negative. But here both are moving in the same direction and it is positive direction. So we will take positive here. So beta, Va equal to 50 minus Vb also 15, it will give 0. So beta, velocity of your bike with respect to your friend is equal to 0. So beta, he will find that you are at rest with respect to him. So beta, if I ask that velocity of your friend with respect to you, then it will be equal to VBA. So beta, it is equal to Vb minus Va. So again it will be 15 minus 15, that is 0. Clear? But beta, what happens when you and your friend are moving in opposite direction? It is 15 meter per second, it is you, and it is your friend which is moving with 15 meter per second in minus x direction. So beta, what is the value of VAB? It means velocity of your bike with respect to your friend. It will be equal to beta Va minus Vb. Beta, Va 15 minus, beta, look carefully, Vb, velocity of your friend's bike, but it is along minus x direction.
सो बेटा यदि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, देन दिस डायरेक्शन आई हैव टू टेक नेगेटिव. सो बेटा नेगेटिव पहले से ही और नेगेटिव फिर बाद में. क्लियर? सो बेटा दिस विल बिकम 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अगेन if I calculate VBA, that is velocity of your friend's bike with respect to you, it will be equal to VB minus VA. But a value of VB, it is in minus X direction, so minus 15 minus as it is VA, it is along positive direction, so 15 as it is, so it is minus 30 meter per second. Beta minus represents the direction of motion is opposite. Clear? So beta if you look at VAB, it is 30 and VBA, it is also 30 but with negative sign. So beta whenever the objects are moving in opposite direction, then relative velocity becomes high. But when the objects are moving in the same direction, then relative velocity becomes less. Clear? So beta this is a case of 1D. Now one example is there on the basis of relative velocity in 1D. A jet aeroplane moving at 500 km per hour ejects the gases at 1500 km per hour with respect to it. Then find the velocity of gas with respect to observer on the ground. But first of all, make the diagram for this condition. It is a jet aeroplane, clear, and it is moving with 500 km per hour, and it is the velocity of jet aeroplane, that is Vj. Now it ejects the gases in downward direction. So beta here it is 15 km per hour velocity is given, but this is relative velocity. How? Ejects the gases at 1500 km per hour with respect to it. It means it is a velocity of gases with respect to jet. So beta velocity of gases with respect to jet, it is given as 1500 km per hour. What you have to calculate? You have to calculate VGO, that is velocity of gases with respect to observer. Clear? So that it is equal to Vg minus VO. Clear? बेटा velocity of observer is 0 क्योंकि तो रेस्ट पर ही है, तो VGO क्या बन जाएगा? Vg. So बेटा we have to calculate velocity of gases. How? Look, but consider vertical direction as positive and downward direction as negative. So the VGJ, it is in downward direction. So beta VGJ is equal to minus 1500. Clear? So the VGJ, we can write it as VG minus VJ minus 1500. So beta VG equal to this one, but a velocity of jet is equal to 500 km per hour. It is in positive direction. So 500. So Vg is equal to minus 1000 km per hour. It means the magnitude of velocity is 1000 km per hour. But a negative क्या represent करता है? It is representing that gases are ejecting in downward direction. Clear? So beta
acting in downward direction. So the VGO, that is VG, in term of magnitude I can write 1000 kilometer per hour. Clear? Okay beta, now beta it is all about relative velocity in one dimension. Now beta we have relative velocity in 2D, that is two dimensional motion में how we will calculate the relative velocity. Suppose beta two objects are moving with velocities VA and VB in a plane. It means there will be an angle between two velocities. So beta for studying relative velocity in 2D, firstly we have to study the subtraction of vectors. क्योंकि बेटा यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे VAB इक्वल टू VA माइनस VB है, सो इट इज़ अ केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं है? बिकॉज दिस मोशन आर अलोंग वन डायरेक्शन, तो वहाँ पर एंगल का कोई डिपेंडेंस नहीं आता. क्लियर? सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. बेटा in this chapter you have studied the addition of vectors with the help of two laws, triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. Now we will learn how to subtract two vectors. Beta, in the study of vectors we can add the vectors but we cannot subtract the vectors. It is very important thing that vectors को कभी भी subtract नहीं किया जा सकता. For subtracting the vectors we have to take the help from addition of vectors. How? We will look. So beta look, subtraction of vectors. Suppose beta we want to subtract the vector B from vector A. So what I have to write? A minus B, vector B from vector A. I have to subtract it. So beta, can I write it as vector A plus minus B? I can write it. So beta subtraction of vectors, it is a basically addition of two vectors. Clear? तो वो होता कैसे है? If I want to subtract the vector B from A, then I have to add the negative of vector B to vector A. Clear? So subtraction of vector B from A is equal to addition of negative of vector B to vector A. So beta again we have to study the addition of vectors. What you have studied? Suppose two vectors A and B are inclined at angle theta. Then what will be the resultant? It will be R and it is equal to A plus B. And what was the magnitude of R? It is equal to under root first vector का square, second plus 2AB cos of angle between them. Clear? And what about direction? Let beta this resultant vector makes angle beta with horizontal. Then tan beta we have written as, इसका बेटा एक शॉर्टकट में मेथड बताता हूँ हाउ टू राइट टेंजेंट बीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय कॉस ऑफ एंगल. क्लियर? Beta here resultant makes angle beta with horizontal. So take that vector with which beta is not there. It is B. So beta write down B. Clear?
with it also b, now plus a, means the vector with which beta is there with r. Clear? So beta, it is a method to write tangent beta. So now in this case we have to calculate the subtraction of vectors. Suppose I want to calculate a minus b, then I have to calculate addition of minus b with a. How we will do it? देखिए बेटा, बेटा ये वेक्टर b है, then negative of vector b will be in downward direction. Clear? So beta, this is minus b, this is a. So beta, a minus b, a plus with minus b. So बेटा ये क्या है? इनका रिजल्टेंट है. तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एडिशन ऑफ दिस वेक्टर्स. तो बेटा a प्लस सेकेंड वेक्टर क्या है? माइनस b. क्लियर? सपोज इट इज r. तो बेटा हाउ वी विल राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर? इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, बेटा पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज माइनस बी स्क्वायर, प्लस 2ab पहला वेक्टर इंटू पहला वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम. बेटा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा. तो बेटा एंगल बिटवीन a एंड माइनस b इज 180 माइनस थीटा. तो 180 माइनस थीटा. सो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. बेटा कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 180 माइनस थीटा, इट इज माइनस कोस थीटा. क्लियर? बेटा सॉरी, यहां पर आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड में. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस 180 माइनस थीटा. सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा. क्लियर? ओके बेटा, लेट दिस रिजल्टेंट मेक्स एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल. देन बेटा हाउ यू विल कैलकुलेट टेंजेंट बीटा? बेटा अगेन राइट डाउन साइन over cos of angle between two vectors. दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा. यहां पर भी और यहां पर भी. क्लियर? सो बेटा विद इट आई हैव टू राइट दैट वेक्टर विद विच बीटा इज नॉट देयर. तो बेटा इट इज माइनस बी. तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड आई विल राइट बी. हियर ऑल्सो बी प्लस फर्स्ट वेक्टर. सो बेटा टेंजेंट बीटा is equal to b sin theta over a minus b cos theta. क्योंकि बेटा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. बिकॉज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos is negative, so it will become b sin theta over a minus b cos theta. Clear? So beta, this is a case of subtraction, and in the case of subtraction I have calculated the magnitude of resultant and the angle made by resultant with horizontal. Clear? So beta, now on the basis of subtraction of vectors I am doing two numericals. Look, first, but an object is moving with meter per second along north direction, and he turns
to east in 5 seconds. So the first of all I have to calculate change in velocity, second acceleration. Beta, if you know about change in velocity, then divide change in velocity by time, you will calculate the value of acceleration. Clear? So beta, this is a coordinate axis. You know very well that in the conventions you take it as east, west, north, south. Clear? So initially the object is moving with 10 meter per second along north direction. So here 10 meter per second. So it is initial velocity. After 5 seconds he turns to east. So beta मान लो यदि यहाँ पर वो ईस्ट की तरफ टर्न ले चुका है तो हमें पता है कि पैरेलल वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड, तो इस वेक्टर को भी मैं यहीं से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन. अगेन द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो इट इज फाइनल स्पीड. क्लियर? बट अ चेंज इन वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट. चेंज इन वेलोसिटी सपोज इट इज डेल्टा वी. So it is equal to V final minus V initial. Again, I can write it as Vf plus minus of Vi. So addition of negative of initial vector in final vector. So beta Vf I have, Vi I have. तो Vi का नेगेटिव नीचे चला जाएगा. It is minus Vi. Clear? It is Vf 10 meter per second. So beta the resultant of these two vectors will be this. Clear? And it is equal to Vf, this one. So it can be written as Vf minus Vi, and it is change in velocity. Clear? So beta इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? It is equal to फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. बेटा इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90. तो 2Vf Vi cos 90. सो बेटा इट विल बिकम Vf स्क्वायर प्लस Vi स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज 10. तो 10 square plus 10 square, it will be equal to 200, that is 10 under root 2 meter per second. Clear? And beta change in velocity, its direction is east of south. Clear? Okay beta, now what about acceleration? It is equal to change in velocity divided by time. तो 10 under root 2 डिवाइड बाई टाइम. टाइम कितना है बेटा? 5 सेकेंड. सो इट इज 2 under root 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? सो बेटा इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. क्लियर? ओके. नाउ सेकेंड, suppose you are moving in a circular track. Here A, B, C and D. But it is a case of uniform circular motion, I have supposed. It means here velocity is V, sorry speed is V, V and V. But what you have to calculate? When you will go from point A to B, then calculate change in velocity. So calculate change in velocity from first A to B, second A to C,
third A to D. So the first two case I will solve here, third case is for you, you have to solve by yourself. बेटा these are the speeds, मैं यहाँ पर वेलोसिटी की टर्म में लिख रहा हूँ. It is VA, suppose it is VB. Magnitude of V and VB is same. It is VC, VD. Clear? So beta, when the object will go from point A to B, then you have to calculate the change in velocity. तो the initial vector कहाँ है? प्लस x में. It is VA. Second, final vector कहाँ है? नीचे माइनस y में. It is VB. Clear? So beta, what you have to calculate change in velocity here. It is initial and it is final. Final. Clear? So beta, change in velocity is equal to Vf minus Vi. So beta, Vf I have to add negative of initial vector in final vector. Clear? So beta, it is initial vector along x, the negative of this vector will come along minus x. Clear? So beta, first and second vector इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा. So beta, रिजल्टेंट क्या आएगा? Vf प्लस माइनस Vi, दैट इज Vb प्लस Va माइनस ऑफ Va. क्लियर? तो इट विल गिव Vb माइनस Va एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा V. क्लियर? सो बेटा, इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 VB VA cos 90. सो बेटा VB एंड VA इनका मैग्नीट्यूड क्या है? V. सो V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर अंडर रूट 2 V. क्लियर है? ओके बेटा, नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट C. तो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी. बेटा यहाँ पर देखें थोड़ा ध्यान से, A पॉइंट पर वेक्टर ऐसे है VA का, एट पॉइंट C वेक्टर है अलोंग माइनस x. Clear? So we have to calculate change in velocity. So that it will be equal to Vc minus Va. तो बेटा यहाँ पर एंगल की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं है, ये तो मोस्ट जैसे रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में हमने किया था सेम केस वही है यहाँ. तो सिंपली हम सोल्व कर सकते हैं. कैसे? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, सेकंड शुड बी टेकन एज नेगेटिव. तो बेटा Vc इज अलोंग माइनस, Vc का मैग्नीट्यूड कितना है? V. क्लियर? माइनस अगेन Va, इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, सो विद V, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 2V. क्लियर है? ओके बेटा, चलो मैं थर्ड केस कर ही देता हूं. A to D. A to D, A पर देखो वेक्टर कैसा है इन दिस वे, and at point D it is upwards. Clear? So here delta V equal to Vd minus Va. Clear? It means we have to add negative of vector A in vector Vd. Clear? So but the negative of vector Va will be in this direction. ठीक है? With the help of vector addition, the resultant will be in this direction. So here, this will be the resultant, that is Vd minus Va. ठीक है बेटा? अगेन इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? अंडर रूट Vd का स्क्वायर प्लस Va का स्क्वायर.
सो इट विल गिव √2v। ठीक है। सो बेटा इस केस में करना क्या होता है, जैसे पॉइंट ए बी सी एंड डी आर गिवन टू अस, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एट पॉइंट ए इज इन along plus x and direction of second vector vb is along minus y. Clear? So we have to calculate the change in velocity. Beta it will be equal to vb minus va. So we have to take the help of subtraction of vectors. So beta take the negative of va, it will be along minus x direction. So beta एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट आपको क्या मिलने वाला है, vb माइनस va, तो उसको क्या लिख सकते हैं, vb प्लस इंटू माइनस va। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? दोनों के बीच 90 एंगल है, तो थर्ड टर्म तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगी। सो इट विल बी √2v। सो बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए पॉइंट पर वेक्टर की डायरेक्शन प्लस एक्स में है, सी पर माइनस एक्स में है। बेटा ये तो केस बन गया वन डायमेंशन का, तो सिंपली हो जाएगा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। वी सी माइनस वी ए यू हैव टू कैलकुलेट, वी सी माइनस वी ए। बेटा वी सी कहाँ है, माइनस डायरेक्शन में, तो टेक माइनस मैग्नीट्यूड, आगे माइनस एज इट इज, वी ए इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, सो टेक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, सो इट विल बी -2v। व्हेन बेटा द ऑब्जेक्ट विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, एट पॉइंट ए इट इज वी ए, एट पॉइंट डी द वेक्टर इज अपवर्ड्स। So beta what you have to calculate, change in velocity, it will be equal to vd minus va. So what we have to do, we have to add minus va in vd. So beta minus va यहाँ पर आएगा, so it will be the resultant vd minus va, again it will be equal to square of magnitude of va plus square of magnitude of vd and whole the under root, it will be under root 2v. Clear? Okay, now beta we have done the concept of subtraction of vectors. Now the last topic, relative velocity in 2D. बेटा हमने जितना भी काम ये किया है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ही तो है, देखा जाए कैसे, यहाँ पर vb माइनस वी लिखा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। सिंपली यदि मैं कहूँ तो वहाँ पर भी तो हम ऐसे निकालते हैं vb माइनस वी से। सो बेटा लुक, now relative velocity in 2D, it means two vectors will be given to us at an angle theta. Clear? So they will move, the object is moving in a plane. Suppose it is the direction of VA, that is velocity of object A, it is VB, that is velocity of object B. If I want to calculate VAB, that is velocity of A with respect to B, then I have to calculate VA minus VB. So it can be written as VA plus of minus VB. Can I write it? So beta it is the addition of negative of vector VB to vector VA. So beta take negative of vector B. Clear? So beta इनका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा, दैट इज R, VA माइनस VB। बेटा इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos of angle between them. Let beta this is angle theta, then it will be 180 minus theta. So
VA square plus VB square plus 2 VA VB cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta क्या होता है? Minus cos theta. So it will become VA square plus VB square minus 2 VA VB cos theta. Now beta, if I ask that what will be the angle made by resultant with horizontal direction, that is this angle, let it is beta. Again tangent beta is equal to, beta write down sine over cos और फुल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो VA एंड माइनस VB के बीच एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा. क्लियर? राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विद विच बीटा इज नॉट देयर. तो बीटा बेटा VB के साथ नहीं है, तो राइट डाउन VB हियर प्लस फर्स्ट वेक्टर. क्लियर? So beta in this way we can calculate the resultant and resultant angle. तो सेम हम कर चुके हैं subtraction of vectors में. Clear? Beta on the basis of relative velocity in 2D, one important topic is there, rainfall problem. Beta suppose we are standing on the ground and suddenly rain comes in vertically downward direction. Then you will mount the umbrella in this way. ठीक है? Okay beta, suddenly you starts moving. Then beta if you mount your umbrella in the previous position like in this way, if I am moving in this manner, then beta you have to change the direction of umbrella to save yourself from the rain. That angle we have to calculate, that is at which angle I have to mount the umbrella to save me from the rain when I am running. Clear? So beta rainfall problem. Look, the rain is coming in downward direction like this. So I am making the vector in this way. VR, velocity of rain in vertically downward direction. Clear? Initially you are at rest, then umbrella position is in this way. ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो तो बेटा अम्ब्रेला आप इस प्रकार से माउंट करोगे. क्लियर? बट सडनली यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन. क्लियर? सो बेटा नाउ यू हैव टू माउंट the umbrella in different position to save yourself from the rain, and that position I have to calculate. Clear? For it beta what you have to calculate? First of all you will calculate the velocity of rain with respect to you, and in that direction you have to mount your umbrella. So beta if you want to calculate velocity of rain with respect to man, then it will be equal to VR minus VM. So that it can be written as VR plus with minus VM. So beta it is a case of subtraction of vectors. So I have to add negative of VM to VR. ठीक है बेटा? So it is VM. So beta negative of this vector is along positive x direction. So it is minus VM. ठीक है बेटा? Now VRM, it will be equal to VR plus with minus VM. It is a resultant. It is equal to VR plus minus VM. Clear? So beta now the value of magnitude of this resultant will be equal to VR square plus VM square. But a third term will get 0 because the angle between minus VM and VR is equal to 0.
So beta, this is the relative velocity of rain with respect to you. So in this direction you have to mount your umbrella in this way. क्योंकि बेटा अब आपको ये लग रहा होगा जैसे रेन इस प्रकार से आ रही है. सो यदि रेन इस प्रकार से आ रही है, देखो रेन नीचे है और मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मुझे अब फील होगा कि रेन इस प्रकार से आ रही है, तो मुझे अम्ब्रेला भी ऐसे करना पड़ेगा. तो दैट पोजिशन वी हैव टू कैलकुलेट एट विच एंगल आई हैव टू माउंट दिस अम्ब्रेला. सपोज बेटा दिस रिजल्टेंट दैट इज वी आर एम, इसको मैं वी आर एम लिख देता हूं. इट मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल. तो क्योंकि मुझे वर्टिकल के साथ ही एंगल बनाना है, ये वर्टिकल पोजीशन है. शुरू में अम्ब्रेला ऐसे था, तो मैंने अम्ब्रेला को इस एंगल से चेंज करना पड़ेगा. तो इट इज अगेन थीटा. तो बेटा दिस एंगल थीटा आई हैव टू कैलकुलेट. बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. बेटा ये वेक्टर वी एम कहलाएगा और दिस वेक्टर इज वी आर. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर. देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम ओवर वी आर. सो बेटा एट दिस एंगल विद वर्टिकल we have to mount umbrella. Clear? So that this was the rainfall problem in which we have to calculate the angle with which we have to mount umbrella to save ourselves from the rain when we are running in a direction. क्योंकि बेटा जब हम भाग ही नहीं रहे फिर तो हम सीधे खड़े रहेंगे ऐसे. जब मैं इस तरफ भागता हूँ तो मुझे फील क्या हो रहा है जैसे रेन ऐसे आ रही है. शुरू में रेन ऐसे थी, अब जब मैं इधर भागूंगा ऐसे लगेगी मुझे, तो अम्ब्रेला भी ऐसे माउंट करना पड़ेगा मुझे. क्लियर? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D. क्लियर? सो द विद इट आई एम फिनिशिंग द चैप्टर मोशन इन अ प्लेन. क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द third unit, that is laws of motion. So beta have a nice day and thank you.